Our today's class is for 12th class. As you know, our subject is geology. We are discussing earth science. Our today's topic is folds, or what we can say, what are folds? Folds may be defined as a curved or zigzag structures shown by rock beds. As you have seen in the fields or in the mountainous areas, especially we will visit these areas, the rock formations which either are in horizontal or in an inclined manner, these rock beds due to some internal or external forces get deformed or get changed into just like the structures or this like curved shape or zigzag structures. Those zigzag structures or curved structures are termed as folds. In other words, we can say that these are the wavy undulations in the rock beds or rock structures. Those rock structures or rock beds which have the wavy undulation features are known as folds. So, folds also resembles with the shape of waves in which crusts and troughs are formed. So folds consists of these crusts which are also known as arches and troughs which of the way just like the similar in waves. So the crusts and troughs show in an alternate manner or in an alternate manner. The size of fold in width. When we see the size of fold in width, it can vary from a centimeter to meter, or it can vary up to kilometers. So there is no permanent size of the fold. It can vary from a centimeter to meter, or it can vary up to kilometers in an area. So arches of the folds or crust part of the folds, just like this upward structure, this is known as the arch. This arches or crusts of folds are known as anticlinal fold or anticline, while as this trough shaped fold, where the dip towards the center, here the limbs goes towards the outside, whereas here the limbs dip towards the center of the fold. This downward, that is known as downward feature, downward structure of fold is known as trough. When in a trough, both the limbs dip towards the center of the fold, this is known as syncline, or we can say also this is a synclinal fold. So this is syncline and this is anticlinal. So every fold consists of sides. Every fold consists of sides, and these sides are known as limbs of the fold. Or this top is known as, I will repeat, this top is known as crust, and that this just like this basin type of or sick type of feature is known as trough. This is known as crust, and this depressed part is known as trough. And this crust is also known as anticlinal type of fold, while as this trough shaped fold is known as synclinal type of fold. So the line which divides the fold into two equal halves. This line divides the fold into two equal parts, part 1 and part 2, but both parts are equal. This line is known as axial line or axial plane of the fold.
This is axial plane of the fold, this line. It divides the fold into two equal. It can divide it in an anticlinal fold into two, or also it divides the synclinal fold into two equal parts, just like this. So, if we try to understand in a simple way, ये जो फोल्ड्स होते हैं ये डिफाइन किए जाते हैं इस तरह, ये कर्व्ड होते हैं, जिगजैग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रॉक बेड्स दिखाते हैं, जिगजैग स्ट्रक्चर्स। इसी तरह से अगर हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे, ये एक वेवी एंडुलेशन होता है, जैसे हमने फिजिक्स सब्जेक्ट में पढ़ा है कि ये एक वेव जिसमें क्रस्ट्स और ट्रफ्स बन जाते हैं, जस्ट लाइक वेव की तरह होता है। फीचर किन में, रॉक्स में बन जाता है फीचर्स, ऐसे फीचर्स जो रिजेंबल्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ वेव, ये रॉक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेव की तरह दिखाई दे रहे हैं। फोल्ड जो होते हैं इनमें आर्चेस बन जाते हैं और ट्रफ्स, जिस तरह वेव में आर्चेस को हम क्रस्ट्स कहते हैं या कॉर्ड्स कहते हैं, और जो सिंक्लाइनल टाइप ऑफ फोल्ड होते हैं इनको ट्रफ्स कहते हैं। साइज जो फोल्ड का ये डिपेंड करता है वहां की फ्रॉक फॉर्म में, जितनी बड़ी होगी उतने बड़े फोल्ड्स बन जाते हैं। ये सेंटीमीटर से लेके वैरी करके मीटर्स और मीटर से लेके किलोमीटर्स तक भी वैरी कर सकते हैं। सो इनमें कोई डेफिनेट विड्थ नहीं होती है, ये वैरी करते रहते हैं। आर्चेस जो फोल्ड के होते हैं इनको हम आर्च टाइप फोल्ड जो होते हैं, इस तरह की क्रस्ट पॉट जहां डिफॉर्मेशन जब हो चुकी होती है तो ऊपर की ओर फोल्ड चला जाता है। इस ऊपर की जाने वाले इस फीचर को हम एंटीक्लाइनल फोल्ड कहते हैं या एंटीक्लाइन कहते हैं। इसी तरह जो नीचे की ओर रॉक फॉर्मेशन दब जाती है, नीचे चली जाती है, उसको हम ट्रफ कहते हैं, उसको सिंक्लाइनल या सिंक्लाइन फोल्ड भी कहते हैं। हर एक फोल्ड के साइड्स होते हैं, जैसे ये एक फोल्ड है, यहां भी इसका साइड, इन साइड्स को हम लिम्ब्स कहते हैं। और एक खास चीज है इसमें, ये जो बीच की लाइन होती है, चाहे एंटीक्लाइन की लाइन होगी या सिंक्लाइन की लाइन होगी, बीच की लाइन जो एक फोल्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा, जो लाइन दो फोल्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा उस लाइन को हम एक्सियल प्लेन या एक्सियल लाइन, फोल्ड की एक्सियल लाइन या एक्सियल प्लेन कहते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द फोल्ड। व्हाट इज अ फोल्ड, फोल्ड क्या होता है और डिफरेंट फीचर्स जो इसके फोल्ड की वजह से बन जाते हैं वो क्या होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द फोल्ड्स इन द रॉक्स। These are the curved structures or zigzag structures or wavy undulations भी हम इनको कह सकते हैं। इनकी वजह से आर्च और ट्रफ्स बिल्ड हो जाते हैं। ये साइज में वेरी करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके के विड्थ होते हैं इन फोल्ड्स के। और जो ऊपर की तरफ फोल्ड जाता है उसको हम एंटीक्लाइन, जो नीचे उसको सिंक्लाइन, ऊपर की जाने वाले को क्रस्ट या आर्च भी नीचे की ट्रफ कहते हैं। बहुत सा आसान सा टॉपिक है। साइड्स में जो फोल्ड्स के पार्ट्स बन जाए उनको हम लिम्ब्स कहते हैं। फोल्ड को जो लाइन डिवाइड करेगी ऊपर से नीचे तक दो बराबर हिस्सों में एक फोल्ड को डिवाइड करेगी उसको हम एक्सियल प्लेन कहते हैं, एक्सियल प्लेन ऑफ द फोल्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द फोल्ड्स।